और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बिल्कुल अपना यहाँ पे अपना यहाँ का जो क्राफ्ट वगैरह जो कपड़ा वो अपना यहाँ से पर्दा करने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने से ठीक है, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ। और ख़ास करके ये टेक्सटाइल में हमारा जो प्रमोद में जो कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए और जो क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए एक यहाँ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने से काफ़ी हमारे युवा पीढ़ी को पैदावान होगा। यही मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। और ख़ास करके अभी अरुणाचल में जो कि आत्मनिर्भर हमें बनाना है, हमें यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। इसीलिए अभी जो बजट जो रखा है एग्री लाइफ में, एजुकेशन में, हेल्थ में रखा है, इसी के लिए मैं सरकार को, हमारे युवा डायनेमिक मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डिप्टी सीएम को, सारे मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री लोकमता सर, थोड़ा समय का ख्याल रखिएगा, बहुत है पार्टिसिपेंट। थैंक यू स्पीकर सर। तो आज मैं बड़ी खुशी से हमारा ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का जो बजट स्पीच को मैं भाग लेने के लिए मैं बहुत खुशी से भाग लेना चाहूँगा। हमें आज खुशी ये भी है कि यूनियन मिनिस्ट्री का जो बजट, जो बॉर्डर एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, जिसके लिए मैंने ये असेंबली में भी लास्ट ईयर हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर का लेजिस्लेचर का थ्रू से हमें यहाँ सुझाव दिया था, उसको सुन के मैं बहुत खुशी है। और आज जो बजट बनाया गया 2022-23, अब ये आने वाला 2023 ये साल के लिए बजट टू फिगर है। बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर रुपीस इतना, बजट फॉर हेल्थ सेक्टर रुपीस इतना, लेकिन उसमें जो प्लानिंग फॉर द एक्टिविटीज, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ में जानकारी जाना जाता है कि हाउ क्रिएटिवनेस इज आवर लीडर ऑफ द हाउस श्री पेमा खांडू जी। इनका क्रिएटिवनेस किस तरह है, कवरिंग ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल, कवरिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, measuring the detailed landscapes of the state of the अरुणाचल प्रदेश। उसमें हमें यह जानकारी, उसमें हमारा दिल ये मजबूत होता है कि आवर चीफ मिनिस्टर इज ए डायनेमिक। एक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होना, हम लोग के निसिंग में एक साइटेशन है सर, हम थोड़ा सा निसिंग साइटेशन बताना चाहूँगा। ये माने हाउ ए बिगिनिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रोडक्शन स्टार्ट्स। दू तमंगने मिलेंगे मिचारिकु मैं दबयानी गुप्तारिकु पिंचंग पाको यापचारिकु चंगतेरा बे दू तमंगने मिलेंगे मिपेतला चंगते हanya relariku चंगते आंगू मुरिku ala atu gongte bu kadue audo ani pertene bermerintene jebeng di rem tela jakabi preng tela duk tamangne abodi haralo
miligi aligam amling aligam kum biam aligam puliyali amgam jebu jakab kabra gadiku a cermuli long lira deba maloli long lira debna agem इसके मतलब हम लोग निसिंग का जो फाइनेंशियल ईयर किस टाइप से बिगिनिंग होता है, हमें सदियों में आदमी नोमैड में था, एग्रीकल्चर सेक्टर में सेटलमेंट नहीं था। जब सेटलमेंट कहाँ से शुरू हुआ, ईयर कैलेंडर किस टाइप से काउंट हुआ, द सीजन किसा करके बिगिनिंग हुआ, द प्रोडक्शन सीजन, उसमें जो है कि हम लोग दुख तमंगने मतलब जो है कि द गॉडेस ऑफ द सीड्स, जो डोमेस्टिकेटेड सीड्स, जो जैसा जंगल का हर प्रकार का पेड़ पौधे को, हर चीज का फल को पूरा काके देखा, काके वहां से प्रोडक्शन हुए में इसका सीड का विजन उसका देवती है, और देवती ने जमीन में आके हर जमीन को उसमें उसी ने जमीन में ही लैंड किया। जो वो लैंड किया जिसे हम लोग दबे पिंचल पैक होगा सर, मीन्स हम लोग ये सीजन में यही सीजन है, यही सीजन में आपका चिड़िया जो है एक सीजनल बर्ड्स का आवाज आता है। तो यहाँ से सब आदमी हम लोग जैसा इसी लोग तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो कैलेंडर को लिखने कौन महीना में क्या प्रोडक्शन होता है, क्या यहाँ में सीजन से काउंट किया जाता है, सीजन से काउंट किया जाता है। फिर यहाँ में यही है बिगिनिंग जहाँ आदमी सेटलमेंट, विलेज लाइफ का सेटलमेंट होने के बाद, विलेज लाइफ को सेटलमेंट किस टाइप का सेटलमेंट है, विलेज लाइफ तो पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक परमानेंट सेटल प्रोडक्शन का से तो विलेज लाइफ बिगिनिंग किया। तो ये कुछ भी कहानी होने से यहाँ से बिगिनिंग हो गया कहानी, ऐसा लिखता है। तो आज हम लोग का ये जो बजट जो है, बजट यही बजट अभी बजट हमने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर अंडर लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम जो प्लानिंग पॉलिसी जो बनाया उसी अनुसार में बजट जो बनाया, अभी हमें इसको एक नंबर जो है हमें किसा करके इसको अचीवमेंट में लाए, सक्सेस में लाए, ये अभी मैटर करता है। हमें बजट का प्लानिंग का मुताबिक में हमें डेवलपमेंट का विकास के तौर पे जाने से हमारे यहाँ में दो सब्जेक्ट है। एक जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक जो है कि स्टेट से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट करने के लिए अरुणाचल में एक इनकन्वीनियंट चीज रह गया। अरुणाचल में को खाया जाने से हम लोग प्लानिंग बनाओ, अब बजट बनाइए, प्लानिंग पॉलिसी बनाइए, अरुणाचल का जो कुदरत का मुताबिक में हमें फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज फॉलो द नेचर। If we speak about the Arunachal Pradesh, the detailed landscape of the state of the Arunachal Pradesh, Arunachal has got 3 temperate zone or at least 4 temperate zone. The फुटिल जो असम का जो लेवल से बिलोंग करता है, ये एक जून होगा, उससे हायर होगा एक जून होगा, उससे हायर होगा एक जून होगा। एक जो है एक्सट्रीमिस्ट में स्नो और ग्लेशियर का एरिया का, तो उसी को हम लोग नप के हर टेम्परेट जून में उसका जो कोई भी नेचुरल फ्लोरा एंड फौना हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, इट वेरीज फ्रॉम द स्वीट्स फ्रॉम, जैसा करके स्वीटेड है, उसी अनुसार में हमें प्लानिंग एंड पॉलिसी बजट बनाना चाहिए। तो उसी के लिए हमें एक नोटिफाइड टेम्परेट जोन बनाना चाहिए। भाई हर टेम्परेट जोन का कौन सा लेवल का है, कितना एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल से है, इट इज सुइटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन।
ऐसा ऐसा करके ये बनाना जरूरी है। ये बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानकारी देना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन जो है, मेरा प्रथम विधायक में 2008 में एक PMGSY जो अभी जो चल रहा है, इसका गाइडलाइन के मुताबिक जो था क्लस्टर अप्रोच इन रेडियस मैनर, वही रेडियस में 4-5 गांव इन रेडियस में सेटलमेंट है, वो बीच में सड़क को बना के रखेगा 1.5 किलोमीटर, उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी, ऐसा करके था। तो मेरा अरुणाचल में हमने देखा, अरे मेरा गांव में खोज दीजिए, एक स्कीम भी क्वालिफाइड नहीं आ रहा है। मेरे RWD का सेक्रेटरी, RWD का मंत्री, CM साहब को पूरा दरखास्त किया, सभी बोला कि अभी गाइडलाइन है, क्या करेगा। तो मैं दिल्ली में जाके दरखास्त, मेरा एप्लीकेशन का ड्राफ्ट, ये नालों में जो अभी बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, हमें रिप्रेजेंट करके हमें मंत्री में उधर मंत्रालय में ये कहा कि हमारा नेचर जो है आपका यहाँ का रेडियस मीनर में नहीं है, आवर इज ए लाइनर एंड फैशन, द क्लस्टर अप्रोच लाइनर एंड फैशन होना पड़ेगा। हमारा गांव का जो सेटलमेंट है इज ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेफ्ट एंड रिवर बैंक ऑफ ए बेसिन, तो इट इज द सेटलमेंट इन नेचर इज ए लाइनर एंड फैशन। ऐसा करके 1 टाइम रिलैक्सेशन मांगा, मिला है। तो लाइकवाइज मेरा ये दरखास्त है हर डिपार्टमेंट का मंत्री, हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एंड खास करके आवर लर्नेड चीफ सेक्रेटरी नरेश जी, जो अरुणाचल में हाईएस्ट टॉपर होकर फर्स्ट टाइम DC आया, ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्टिव ऑल्सो, इज वेल अवेयर अबाउट द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट। तो आप लोग को यह दरखास्त है कि गाइडलाइन को तोड़ा किस टाइप से नेचर का माध्यम से किस को फॉलो करते हुए, आदमी का जो अवेयरनेस को भी, कॉन्शियसनेस को भी तो फॉलो करते हुए थोड़ा रिलैक्सेशन किस टाइप से लाया जाए। हमें देखा है जैसा अभी आपका आत्मनिर्भर किस कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, तो इसमें देखा जाए तो हमें उसमें जो गाइडलाइन के मुताबिक में जो प्रोविजन ऑफ द एक्टिविटीज, तो ये तो स्वीट नहीं है। हम कुछ भी बाजित बनाए, प्लानिंग बनाए, हम लोग आदमी का ह्यूमन जो हिस्ट्री जो बनता है, रोटी, कपड़ा और मकान, हमें रोटी को पहले ध्यान देना पड़ेगा। रोटी सही है, मकान सही होगा, कपड़ा सही होगा। तो हमें रोटी कपड़ा ये एक बेसिक प्रिंसिपल है फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो उसी दिशा पे जाए तो हमें रोटी को ध्यान देना पड़ेगा। देने से आपका यह मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन का मुताबिक में, जो अदर स्टेट में लाइक यूपी, बिहार, गुजरात एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेन स्टेट लैंड सेम स्टेटस ऑफ लैंड है, उसमें तो अच्छा से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर सब आगे बढ़ रहा है। उसमें जो कि जैसे अभी मैंने कहा कृषि और बागवानी योजना, यहाँ में बैंक लोन का भी कंपोनेंट है। यहाँ में एक चीज हमारा इनकॉम्पिटेंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ में कि वो पैसा से वो योजना में ट्रैक्टर खरीदना है, कोई सोसेज वायर खरीदना है। इसका बाद में तो ये देखा जाएगा तो हमारा अरुणाचल में तो ट्रैक्टर चलाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होने से पासीघाट एरिया है, नामसाई एरिया है। मैं अपना किटी में ट्रैक्टर लगा के देखा, ट्रैक्टर तो हेवी है, हमारा काम करने वाला को उल्टा खींच के पानी बुक्स के नीचे में ले गया। ट्रैक्टर को घुमाना और ट्रैक्टर जो एक जो है कि ड्राइवर चलाना, एक जो है कि पावर टिलर है। पावर टिलर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। आई हैव सीन ट्रैक्टर का सब्सिडी कितना दिया गया, नो एनी ट्रैक्टर इज बीइंग ऑपरेट, उसको कोई यूज में नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मार्केट नीचे में बेचता है जो बेनिफिशियर लोग या आसाम आदमी लोग रेंट लेके लेता है।
तो इसे सर्टेन गाइडलाइन को एक रिलैक्सेशन करने के लिए हर डिपार्टमेंट, हर मंत्री, मेरा सुझाव, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये देखा है, तार फेंसिंग तो हम लोग बॉर्डर बेल्ट में कभी नहीं पहुंचता है, हेडलूड। और तार जो है कि आपका कुत्ती चाहिए, वो कुत्ती तो अगर काट से लगाएगा, वो काट गिलेगा तो तार भी जमीन में मिट्टी में जब मिल जाता है तो जल्दी रास्टिंग हो जाता है। द ड्यूरेबिलिटी इज नथिंग। तो उसी में आपका बैंक लोन तो ठीक है, बैंक लोन में मानता हूं, पावर टिलर ट्रैक्टर का जगह में सोर्सेज वायर फेंसिंग को भी मैं नहीं मानता है। उससे अच्छा हम हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में यह लागू करा कि बॉर्डर विथ क्ले का वॉल फेंसिंग बनाएगा, पत्थर अवेलेबल है, दैट विल बी वंस फॉर ऑल, और जनरेशन टू जनरेशन फेंसिंग बनाना नहीं पड़ेगा। MIC एग्रीकल्चर को मुकाबला करने के लिए नंबर 1 फेंसिंग इन द MIC जो वाटर सिस्टम जो है ये सही होना पड़ेगा। जो वाटर इरिगेशन का सिस्टम, वाटर इरिगेशन सिस्टम बोलने से उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उधर पहाड़ का पानी किसा निकलता है, किसा का फेलर होता है, देयर आर मेनी रीजन। नीचे फुट हिल में आपका जो वाटर, ये जो दिल्ली या अदर यूपी बिहार असम में देखने से तो पानी ऐसा जो वाटर ये क्या बोलता है, ड्रिपिंग ऐसा कुछ बोलता है, उसका सिस्टम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसा पानी दिया जाए वो अलग है। तो ऐसा करके एग्री और हॉर्टी को हमें झूठ देना चाहिए। यहाँ में खास करके फेंसिंग एंड वाटर सप्लाई, ये दोनों चीज है। इसका बाद में इसका बाद में जो टाइमली क्रॉपिंग, उसको आपका कौन समय में आपका जो हार्वेस्टिंग का पीरियड कौन महीना में क्या क्या सुइटेबल है, ये डिपार्टमेंट वर्कआउट करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो हमने देखा है, डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटनरी, इंडस्ट्री, जितना जो नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नॉन इंजीनियरिंग जितना डिपार्टमेंट है, दिस इज द एक्चुअल द मेन इंजन ऑफ द डेवलपमेंट, मेन मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। इनका दिमाग में अगर कुछ जागरूकता अगर नहीं है तो कहां से पब्लिक रूरल आदमी जागरूकता में आएगा? तो होना जरूरी है, अवेयरनेस कराना जरूरी है। तो हमें देखा है हमारा या पीपल या जहां में जो डेवलप है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस है, लाइक सागाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 0 और जितना जितना जो फूटिल एरिया वहां से लेके पासीघाट हो गया, ये हो गया। हमारा बात को सुन के फिर शुरू में लगे, अरे आप लोग उधर में तो बुद्धू है, कुछ किसी करने भी नहीं आता है। हम तो हमारा तकलीफ को बता रहे हैं आप लोग को। हम चाहते हैं कि हमारा गांव आदमी, हमारा जो नौजवान भी, अनएम्प्लॉयड यूथ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जाइए, अपना जमीन को यूज में लाइए। सभी तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलो, नौकरी करो, एक बिजनेस करो, खेती तो होना चाहिए। दिस इज माई फोकस, क्योंकि अपना जमीन को यूज में लाना पड़ेगा। एंड माई अनदर इश्यू इज आई बीइंग फ्रॉम द बॉर्डर एरिया, इन द तिब्बत बॉर्डर एरिया, हमारा आदमी पूरा माइग्रेट होके बैठ रहा है। दिस माइग्रेटेड ग्रुप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम बहुत दिन रात चिंता में बैठा हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने ये जारी किया, हमें हर एवरी ग्राम सेगमेंट में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगा। दिन हर प्रोडक्शन जो निकलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू से हम लोग ओवरऑल सर्कल में एक ब्लॉक में एक होलसेल नॉमिनी बनाया जाएगा, और नॉमिनी बाय कैश पेमेंट लेके उठाएगा। फिर नॉमिनी के लिए हम MLA फंड से एक गाड़ी देंगे कि वो मार्केट में जो ये कमर्शियलाइज करेगा बाहर में। तो भी आदमी पीपल कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, ऑफिसर्स ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग मी, नहीं ये इनका बात तो सही है, उसमें जाना है, ये भी नहीं हो रहा है। इसलिए
जितना जो गाइडलाइन है उसको हर डिपार्टमेंट का गाइडलाइन, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का गाइडलाइन जो स्वीट नहीं होता है उसमें हमें किसा करके प्लस करना पड़ेगा, इसका किसा करके माइनस करना पड़ेगा, किसा जो इनकन्वीनियंट कुछ जो गैप को किसा करके फिलअप किया जाए, ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट उसको या कुछ जुड़ाएगा या उसको एक साथ इनोवेटिव वे में सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम का ऊपर में हम लोग स्टेट का फंड भी एक साथ जुड़ा के जहाँ में पैसा इन्वेस्ट होता है वहाँ में अच्छा से सक्सेस होने के लिए ये एक कैलकुलेट करके एक जाने से ठीक है। अनदर थिंग इज हमें हर डिपार्टमेंट का जो सिस्टम को, जो ऑफिशियल फंक्शनिंग सिस्टम को, उसको भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक पॉलिसी बना के किस टाइप से इफेक्टिव फंक्शन हो, जो सेक्रेटरी को बात को डायरेक्टर अच्छा से फॉलो करे, डायरेक्टर और इसका नीचे को अच्छा से फॉलो करे, सो दैट एवरी रेस्पॉन्सिव आपस में झगड़ा तो हो जाओ। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी जिसका सीनियर हो गया, ये हो गया, वो कोई किसी का बात को भी अपना बड़ा वाला का बात को भी ना मिलता, अरे हमको क्या सर्वे से क्या, ये चैलेंजिंग ना हो, इसका ड्यूटी हमें तो अवर पॉइंट इज पब्लिक का पॉइंट है कि हमें आपका वर्क आउटपुट हो, द वर्क आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी हेड इज वेरी शॉकिंग। हमारा स्टेट ओवरऑल का आपका सैलरी हेड में कितना रुपया जाता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट में इसको ब्रेकअप करके कितना कितना रुपया जा रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट टू वेरी इनप्रोपोर्शनेट है। दिस इज ड्यू टू आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम थोड़ा सही नहीं होने के कारण से हम दिखाई देता है। इसलिए हमें सब सोचना पड़ेगा। हम अभी खुशी है बजट में, फिर उसको किसा अचीवमेंट करना पड़ेगा, ये सुझाव मैं मेरा तरफ से जो है दे रहा हूँ। अभी आपका देखिए, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में दो प्रकार की आपका जो हम लोग ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट बोलता है, एक ब्यूरोक्रेट है एक टेक्नोक्रेट है, हम लोग हो गया पॉलिटिक्नोक्रेट। देन ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट में भी हम जो चीज देखा है, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग, तो नॉन इंजीनियरिंग में लाइक फिशरी डिपार्टमेंट में हमने देखा है, खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी हम देखा है, वो एस्टीमेट बनाता है एक DFDO डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, वो 50 लाख 60 लाख का एस्टीमेट बनाएगा। तो हम बोला कि आपका एस्टीमेट पास होता है कि हाँ हम लोग पास करता है, पैसा मिलता है। तो दिस इज इट इज बेटर ऑफ दिस थिंग। तो ये तो हमको शॉकिंग हुआ। हम कोई भी एस्टीमेट जो अदर देन प्रोक्योरमेंट आइटम तो ठीक है, मार्केट का जो कोटेशन का मुताबिक में, मार्केट फैक्ट्री का जो और चालान का मुताबिक, रेट आइटम का मुताबिक में चलेगा। जो भी चीज फिजिकल वर्क आएगा तो उसमें क्या चीज का है, उसमें टेक्निकल का कैलकुलेशन आएगा, टेक्निकल का जस्टिफिकेशन आएगा। अब एक फिश पॉन्ड को कूदने के लिए एक उसको 8 एक्सकेवेशन होगा, उसको डिस्पोज बाहर में करने से कितना लीड कितना डिस्टेंस में फेंक रहा है, उसका कॉस्ट आएगा। फिर उसमें सीमेंट कंपोनेंट आएगा, तो स्टोन एग्रीगेट आएगा, सेंड आएगा। देन हाउ डू यू कैलकुलेट, हमने इनको पूछा है, वो कैलकुलेशन नहीं है। वो कैलकुलेट करता है तो दिन आखिरी में रेट आएगा, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आके दिन रेट आएगा। रेट तो कहाँ से बेस करेगा, अरुणाचल प्रदेश शिड्यूल ऑफ रेट को बेस करेगा। देन हु इज अथॉरिटेटिव पर्सन टू कोट द APSR, ये तो इंजीनियरिंग विंग है। तो नॉन इंजीनियरिंग विंग किसा रेट कोट करके एस्टीमेट बनेगा, तो उसको भी तो अगर फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ये बात अगर मान के चलता तो भी तो गलत है। तो हम चाहता है सर प्लीज 1 more सेकेंड, हमें ये हम
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जितना जो है वो आइडिया देना चाहिए। उसमें जितना जो टेक्निकल का पार्ट जो कंपोनेंट है जो है उसको वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट करना चाहिए। हमारा सुझाव ये है कि वी हैव ए वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या जाने से वी हैव ए PWD, वी हैव ए पावर, वी हैव ए हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, वी हैव ए RWD, Rural Works Department, we have a WRD, then we have got RD. PWD का रोड एंड ब्रिज में ठीक है, RWD जो जितना जो विलेज अभी जो PMG का रोड चला रहा है ठीक है, देन WRD जो है, WRD का कहे जाने से WRD डिपार्टमेंट को मैंने देखा है, ये WRD जो है अर्लियर RD WRD सब एक ही डिपार्टमेंट में था, यूनियन टेरिटरी समझ में, RWD PHEB वो अंडर में था। तो अभी WRD जो है ये जो है कि आपका जो इरिगेशन का मेथड करता है, जो ये डिपार्टमेंट जो है कि जैसा ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, ब्रह्मपुत्र का बोर्ड कोई स्कीम एक मेरा एक दोस्त एक बार प्रोसेस किया था दिल्ली में, मैंने पता चला वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड से पास करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र का बोर्ड अंदर में अगर आता है तो अरुणाचल का जैसा कि सुबनसिरी नदी है, कामिंग नदी है, तिराप लोहित नदी को सियांग सिर्फ कैचमेंट एरिया में आता है, उसको तेजू और सियांग, बाकी तो वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गाइडलाइन में नहीं है बोला उसमें जैसा कि फ्लड कंट्रोल बनाना क्या बनाना। तो मैंने इसको बोला अरे भाई वही अगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड अगर है, वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड मेंबर को मैंने बोला अगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, अब व्हाट इज ब्रह्मपुत्र, यू शुड फर्स्ट स्टडी। ब्रह्मपुत्र एक ध्रुव से तो पानी समुद्र बनता है, ये किसा के ब्रह्मपुत्र बन गया। यू आर टू डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो मूल स्टेट गवर्नमेंट से आखिर में बोला कि मूल स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाइड ऐसा कुछ दिशा नहीं दिया इन लोगों को कि ये बेसिन ब्रह्मपुत्र अंदर में आता है, ये बेसिन ब्रह्मपुत्र में आता है। तो ये WRD का बात याद करके मैं ये बता रहा था। तो WRD इज इरिगेशन रिलेटेड है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी वर्क है हम देखने से होती एग्री में WRD एंड RD को देना चाहिए, एजेंसी एंड RWD ये तीनों को। और यहाँ में जो रूरल में जितना जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी टेक्निकल जो वर्क है तो वो होना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग विंग में मैंने थोड़ा ये करके देखा है, अभी RD इन द पंचायत, RD में है कि आपका नीचे में सबसे नीचे में EO इंजीनियर है, देन EO एग्री है, EO इंजीनियर, देन APO RE, देन जॉइंट डायरेक्टर RE। तो जॉइंट डायरेक्टर RE इज इक्विवेलेंट टू AC, जो इसका जो फाइनेंशियल जो पावर है जो वर्क ऑर्डर वगैरह को जो साइन करने के लिए। तो मेरा सुझाव ये है कि जो पंचायत में जितना जो JEE इंजीनियरिंग जो है वो जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिसाब से आया, एजुकेशन में जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिसाब में आया। तो पंचायत और RD जो रिलेटेड है दोनों को एक साथ में मार्च कराने से ठीक है। और RD में अगर इंजीनियरिंग विंग अगर रहता है तो उसमें एक चीफ इंजीनियर खुद होने से ठीक है, आपका जॉइंट APO RE और इसके बाद में जॉइंट डायरेक्टर RE ये डिजिग्नेशन को हटा के, बिकॉज दिस डिजिग्नेशन इज ए ओल्डन डिजिग्नेशन जो DRDA का रूल नॉर्म्स का मुताबिक में आया गया। आजकल DRDA का भी तो हटा रहा है, वो अभी RD में मार्च हो रहा है। तो वही लाइक मैंने आपका यहाँ में AE JE एग्जीक्यूटिव और इसी चीफ इंजीनियर लेवल में अगर RD डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियरिंग विंग अगर होना है तो मेरा सुझाव है कि वो होने से ठीक है। ये आपका जो जॉइंट डायरेक्टर RE जो APO RE इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। और ये है देन इन द ब्लॉक लेवल, बिकॉज RD इज द डिपार्टमेंट इज द की डिपार्टमेंट who is operating in the grassroots level at the village level. Its administrative setup, its monitoring setup should be
well transparent and very active, should be very strong. हमने देखा है एज पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज द की ऑफिसर in the block level, in the grassroots level. Under the umbrella of the BDO, block development officer, there is a AO industry representing from industry department. There is a AO agri representing from the agriculture department. There is a AO horti, AO fishery, AO veterinary. So in the गांव लेवल का मुताबिक में हम लोग तो ये समझता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट का बिकॉज आपका BLW है, BLW जो पोस्टिंग हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वहाँ पोस्टिंग हो गया, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द BDO. अभी अर्लियर यूनियन टेरिटरी पीरियड में द मॉनिटरिंग सिस्टम, द वर्क एक्टिविटी सिस्टम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द BDO वाज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. अभी जो है कि ये होच-पोच हो रहा है. अभी BDO does not know what exact activities is फ्लैगशिप प्रोग्राम जहाँ में एग्रीकल्चर का होता है, हॉर्टिकल्चर का होता है, ये होता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, कौन डिस्ट्रिक्ट हेड ही खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, विच इज अंडर नॉलेज ऑफ नॉट अंडर नॉलेज ऑफ द BDO. तो ये होने से तो BDO नोज, तो दिस इज क्रिएटिंग डुप्लीकेसी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज. तो इसका अलग है और BDO का अलग है. BDO is holding the detailed economic census. We follow the economic census of own block. उसमें old age का कैसा है, old age का डिटेल है, then below poverty का डिटेल है, तो हर चीज़ तो वो मॉनिटर कर रहा है. तो उसमें फिशरी डिपार्टमेंट में क्या बेनिफिशियरी स्कीम, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स क्या ले रहा है, BDO डज नॉट नो, तो डुप्लीकेसी आ जाता है. तो क्योंकि आरडी में तो ये सब एक मैंने ये हो रहा है, इसलिए उसको स्ट्रीमलाइन करने, रीऑर्गेनाइज करने के लिए मेरा इस में जो BDO का जैसा जो फंक्शन है ऐसा रहने दे के अंडर BDO का अम्ब्रेला में उसको पोस्टिंग किया जाए हर डिपार्टमेंट को, जो पहले जैसा करके चलता था. तो दिस इज वन थिंग दैट हैज टू बी कीप इन माइंड टू रेक्टिफाई. ये मेरा सुझाव है. देन अनदर है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा चीफ इंजीनियर होना भी कॉम्प्लिकेट है. इस चादर में थोड़ा ये हो के जूत मूत में हम लोग पब्लिक हेम्पर्ड इसलिए आती है, पेपर वर्क डिले में, डिलीवरी ऑफ द टाइमली वर्क, इस चादर उसका एक उधर चलेगा, एक उधर चलेगा. तो इसमें एक लिमिटेड उसको स्ट्रीमलाइन करने से ठीक है इंजीनियरिंग ये सेक्टर में. इसके बाद हम खास करके ये मेरा एक सुझाव है, अगर उसमें कोई गलत है तो माफ कीजिए, बिकॉज दिस इज अ प्योरली माय सजेशन व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो प्रैक्टिकल में जो ग्राउंड जो देखा देता है. देन लास्टली हम बोला जाए तो और बोलने के लिए है, लेकिन ज़्यादा सुनना भी तो आदमी बोर होने से तो फायदा भी नहीं है बोल के. कान में नहीं घुसेगा भी तो जबरदस्ती घुसा भी नहीं दे सकता है. तो मैं तभी जो भी बोलो, हमारा ये टीम, हम लोग इस बार का जो सरकार है अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए टीम स्पिरिट, टीम अरुणाचल है. हर डिपार्टमेंट में भी एक टीम स्पिरिट हो, टीम RWD, टीम PWD, टीम एग्रीकल्चर, टीम हॉर्टिकल्चर, पूरा ये मैकेनिज्म को सही ढंग बनाने के बाद में टीम स्पिरिट में जाके हमें विकास को, हमें खास करके रूरल गांव में कैसा करके हो. गांव में हम अकेला समझा के तक गया, आप सब ऑफिसर भी साथ दो. हम तो ये बताता है कि डेवलपमेंट गांव से आता है, रॉ मटेरियल गांव से आता है, कपड़ा भी गांव से आता है. नो बॉडी एग्री दैट. कपड़ा कहाँ से गांव आता है, वो तो दिल्ली से आता है, गुवाहाटी से आता है. हम बोला इसका प्रोडक्शन तो गांव से होता है. तो इस टाइप का हम गांव का तरफ दिशा में तो विलेज डेवलपमेंट को आगे ले जाना एक हम लोग का मिशन
हर डिपार्टमेंट का जो टारगेट, एक कमिटेड टारगेट होना चाहिए कि गांव को किसा आगे ले जाए। अभी अर्बन एरिया के लिए हम लोग का ये रोड का बारे बोलने से ट्रांस हाईवे चल रहा है और पीएमजी भी चल रहा है, ये है। और अभी गांव का भी हमें मोड़ना पड़ेगा। गांव खास करके हमारा इंडो बॉर्डर एरिया जहाँ में इनएक्सेसिबल एरियाज को एक टूरिंग प्रोग्राम का रख के हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, एक आप लोग का ब्यूरोक्रेट लेवल में, और सीएम साहब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को तो विजिट हो रहा है, इनका पास तो नॉलेज है कि कॉन्सेप्ट है कौन कौन का किसका कुदरत किस टाइप का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसा है। तो उसी आधार पे हमारा यह प्रयत्न है कि सबको जितना जो हमारा जितना मेंबर्स है, जितना हमारा ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट को, हमारा बॉर्डर को हमारा साथ थोड़ा हमको भी इनकरेज कीजिए और हमारा आदमी को किसान के इनकरेज करके हाउ माई पीपल टू live intact in my own land for the safeguard of the own land, being border area, international border area. तो ये मेरा प्रेयर है, प्रार्थना है बॉर्डर अफेयर्स में सब अगर इंटेक होता है तो कुछ भी हम लोग एक साथ में अपना सेफ गार्ड के लिए काम कर सकेगा। तो दिस इज माई दिस थिंग। Another thing is Honorable members, please conclude. just 1 minute, sir. No, you are supporting or you are objecting the what called budget? No. Objection है ना supporting कर No, supporting, sir. हाँ, तो जल्दी supporting. खत्म कर दीजिए। It is purely You spoke supporting. more than 35 And my minutes. another suggestion is that we have a targeted, committed work project to be completed. जैसा कि पीएमजी विषय में अभी सब लोग बोल रहा है, आपका सितंबर में कुतुब आएगा तो फान आना लोक हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक सुझाव है कि हमारा अरुणाचल में हिंद्रेंस किसा है, नेचुरल हिंद्रेंस। ये बारिश एक बड़ा हिंद्रेंस है, कोविड इस बार तो कोविड तो बड़ा हिंद्रेंस है, तो ग्लोबल एक हिंद्रेंस है इन वर्क एक्टिविटीज में। बारिश वर्षा जो है अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज इज वन हिंद्रेंस। हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को कई बिल्कुल अच्छा काम कुतुम करेगा बोल के दिन रात करता है, लेकिन बारिश को क्लाइमेट को मुकाबला ही नहीं कर सका, जिसका कारण कुछ डिले है। और उसको सब अगर ब्लॉक हो जाएगा बोलने से हम तो घबरा रहे हैं कि मेरा अंदर में पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कुतुम हो। मैं ऑनरेबल सीएम साहब को भी, डीसीएम साहब और हमारा आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सबको यह दरखास्त है कि इसका थोड़ा ख्याल करें ताकि लोग ना हो। Then, thank you. Lastly, I once again congratulate and appreciate the planning of the budget of the year 2022-23 under the dynamic leadership of Shri Pema Khanduji, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. Thank you. Thank you. Next, Kagong Tagu जी, आप लोग 10 मिनट लेने से ठीक है, बहुत ज़्यादा आदमी है। Honorable Deputy Speaker, sir, thanks for giving time to speak on budget 2022-23. Sir, I have gone through the budget 2022-23. Really, it's a grounded and realistic budget as it covers what are to be covered. ये बहुत अच्छा बजट है, हर सेक्टर को ध्यान दिया गया है। इट्स एन इंक्लूसिव बजट। ये बजट को लेके मैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मरियांगेकु एंड माय ओन बिहाफ आई वुड लाइक टू congratulate our most dynamic Honorable Chief Minister, our most competent Honorable Deputy Chief Minister, learned Chief Secretary, Secretary Planning Finance, and team members for taking faith to prepare this realistic budget.
Sir, while appreciating and supporting the budget, I would like to throw some light on my constituency. Sir, मेरा मायांगेकू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है कि ही इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता है एंड ऑल्सो इट डज नॉट फॉल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, it does not fall in urban areas, and also my constituency does not fall in foothills and interstate boundaries. इसका चलते we cannot take the schemes of border area, we cannot take the schemes of urban areas. Sir, अरुणाचल में ऐसा भी बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 2-3 ब्लॉक्स जो है अर्बन एरिया बॉर्डर एरिया में पड़ता है, जिससे अर्बन बॉर्डर फंड मिलता है, एंड 2-3 जगह जो है अर्बन एरिया में पड़ता है तो अर्बन फंड मिलता है, एंड 2-3 ब्लॉक्स जो है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक भी होता है तो इससे भी फंड मिलता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आगे निकल जाता है और मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बीच में रह जाता है। सर, हमको लगता है मायांगेकू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, जबकि मेरा मारियांग टाउन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ आदि बेल्ट नेक्स्ट टू पासीघाट, बट आदि बेल्ट का जितना भी टाउन है आगे निकल गया सब। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मायांगेकू जो है बीच में रह गया। सर, आई एट्रीब्यूट दिस मिसफॉर्चून to the reasons that my constituency fall in middle zone, which cannot avail the fund, the schemes of border areas, the schemes of urban areas, and the scheme of foothills. इसलिए सर मैं थ्रो यू मैं ये अपना पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी, द कॉन्स्टिट्यूंसी लाइक मायांगेकू needs little more sympathy from the government. गवर्नमेंट से सिंपैथी मिलता है ऐसा बात नहीं मिलता है, वी गेट सिंपैथी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट नीड्स मोर सिंपैथी, क्योंकि अपना मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ ले जाना है, साथ में जाना है। नो पार्ट ऑफ अरुणाचल कैन बी लेफ्ट बिहाइंड। सर, इसके बाद मैं आपका थ्रो कहना चाहूँगा, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी नॉन बॉर्डर ब्लॉक, नॉन बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो नॉन बीएडीपी दिए हैं, फंड दिए हैं, ये बहुत काम में आता है, और इफ इट कुड बी एनहेंस, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत रिलीफ मिलेगा अप टू सम एक्सटेंट। सर, ये सब कहते हुए मैं ये बजट 2022-23 को सपोर्ट करते हुए यही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। Thank you. Next, Wang Nawadong. Honorable Deputy Speaker, sir, thank you for permitting me to take part in the budget discussion. At the outset, I would like to appreciate the Honorable Deputy Chief Minister, who is also in charge of finance and planning.
bringing out a sustainable budget in this very difficult situation and times. Though it may be called a deficit budget, deficit is good in developing economies like India and also an upcoming state like ours, Arunachal, which also helps in generating additional demand to boost the economic growth. That way, there is a positive sign and aspect of being a deficit budget. The estimates of 2022-23 projected an amount of 24.253.54 crore as capital receipts, as revenue receipts, sorry, and 1,858.09 crore as capital receipt, making a total receipt of 26.111.63 crore, which is an encouraging 15.6% higher than last year's. One of the good aspects of this budget which I have seen is the creation by blocks, the presentation in a block form of 6 blocks, which is very easy to assess also by any person and to understand. And I feel that is what the essence of the budget should be, that it is easily subscribable to the lay person to follow and to make his own or her assessment of what the budget of the state indicates. I would also like to appreciate the state government under the leadership of Shri Pema Khanduji, along with Honorable Deputy Chief Minister, that our state has been awarded the most improved small state category as far as infrastructure and governance is concerned. That I feel is a good achievement. Though I may be critical of some of the aspects of the budget, but the good things that are there in it, I have to appreciate. That is the very essence of our discussion, and that is the true ambience of the parliamentary form of democracy in our state. Going into the detailed conscription of the budget may take quite a long time. It may not be very relevant. But some of the points that I would like to raise, that this government has this year given emphasis to culture and also particularly the indigenous and also the Atmanirbhar, which I think is very important in a state like Arunachal. We have to go back to the roots. We have to know who we are. And that can truly be reflected by preserving and promoting our cultural heritage. Coming into the cultural aspect, I would once again like to thank Honorable Minister, Deputy Chief Minister and Finance Minister
for sanctioning in the last year's budget an amount of 2 crore for the Norottam Cultural Heritage Center at Borderia. Norottam was my forefather, the erstwhile chief of Borderia Namsang, undivided, who was initiated into the Vaishnavite fold in the year 1670. And remembering him and his contributions as a saint will reflect the due importance that the government has given to the cultural affinity of our people. And many of the schemes that has been promoted in building cultural halls, centers, there in Tirap also, there are some people who still believe in the Vaishnavite fold, in the Hindu fold. So they have namghars in the villages. So I would like to request Honorable Deputy Chief Minister to also keep aside some fund for these namghars in Tirap district, in the places where it need to be built. And also I would like to take this opportunity to request him further to enhance the Norottam Cultural and Heritage Center building fund as suggested in the DPR in the current fiscal year if possible. Now, the government has also given emphasis on health sector. And amount of 30 crore has been earmarked for allocation to improve PSCs and CSCs. That is very important. What we had been focusing on was only in the general hospitals situated in the towns and the capital regions, and also the district headquarters of district hospitals. But those in the remote areas subscribing to the health services of the poor villagers in remote localities where PSCs and sub-centers are situated. These centers also should be looked into. Most of the PSCs in the state are functioning with inadequate manpower and staff, and also without the basic medical infrastructure that is so much required for improving the health. As health is the key to progress, an amount of 450 crore had also been kept aside. I feel that due importance and cognizance must be taken. We have just gone from a very critical situation. We have not yet come out from the dark. COVID situation. We all have to be careful. There is a talk, we have just seen the third wave. There are assumptions
and talks of a fourth wave. God willing, I hope that no more waves will occur, but one can't say. So health is very important, and we have to be very careful as far as this is concerned. Another sector is the education, which is equally important. The government has earmarked an amount of 500 crore, if I may be right, for the Eklavya model residential schools in the state. 8 more are in the pipeline. I too have one suggestion, as I have an Eklavya model residential school, EMRS, in my constituency at Khela village, which was sanctioned in the year 2016. The construction is yet to be completed because of inadequate funding. An amount of 14 CR was allocated for this construction of the EMRS in my constituency at Khela village. The buildings and the structures have come out excellent. And people who have gone there to visit and see it have all appreciated it. Say that it's coming up beautifully. Only some infrastructure is yet to remain completed. And hopefully by this year itself, this session we will start its operation. Why I'm saying so is that an amount of 14 crore was allocated for that EMRS, whereas now we see an amount of 500 crore being ought to be utilized for this EMRS. So if you take that into consideration, each EMRS will be allocated a substantial amount of, say, 40 crore rupees. Why I'm stating this is that with the 14 crore that has been allocated for the EMRS there is no proposal for auditorium. That means there's no auditorium, no playground, no power supply connection, no approach road. The boys' hostel is yet to be constructed. The water supply, with the kind approval of the PHE department, has been connected. There was an additional expenditure. So I feel that while allocating this 500 crore, please also remember me. The PMGSY maintenance, an amount of 30 crore has been earmarked. ₹60 crore, I'm sorry. But then there is a condition that any road which is less than 5 kilometers will not be benefited by this maintenance fund. Many of the PMGSY road in my constituency are below 5 kilometers. So I'll be deprived of this maintenance fund. So can't the department concerned bring out an amendment to include all PMGSY road, no matter how small it may be, so that we are not deprived of this maintenance fund. And most of the PMGSY road in my constituency was constructed more than 10 years ago. I would also like to appreciate, as far as education is concerned, innovative schemes and ideas have come up to uplift and encourage the students
of the schools, like the Mukhya Mantri Shiksha Course, and also the Mukhya Mantri Champion Fund, which will bring out the talent, the hidden talent among the children. But one thing I would like to point out is that Tirap Polytechnic, the buildings which were completed, is lying idle. No attempt has been made by the education department as yet to start the polytechnic. Neither is there any ITI in the district. So I feel that the education department should take steps to see that this polytechnic comes up and starts functioning. There are various reasons and excuses that are given by the department, but I'm not sure how far that is true. And also, as far as the Golden Jubilee multipurpose activity centers in the 5 basins are concerned, there is also an innovative scheme as far as sports is concerned. There is also a very appreciable scheme. And the agriculture, horticulture sector of providing 60 crore for areca nut, tea, rubber, etc. is a brilliant idea to bring about the improvement of horticulture and agriculture in various parts of the state. My region, PCL region, has got good climatic condition for these crops, and people have taken up these 3 crops in a large way. Last year too, I think some fund was allocated for that, but I do not know how that distribution took place. I hope that this year, when such a huge amount has been kept, the encouragement of the farmers of these 3 crops, that it will reach all the beneficiaries. The government has taken a deep concern and importance for the development of border areas, the border villages. Very appreciable. But besides that, there are areas who reside in the Assam border part, like my constituency and various other constituencies are there. We have a non-BADP schemes allocated to the non-border area, international border areas. But that amount is not sufficient, 1 crore. So I feel that the entry to our state should also be beautified. And how do we beautify and fortify it? By giving us various schemes of development, so that anyone coming, any tourist entering Arunachal will feel that, yes, some semblance of development and progress has been done. So besides the international border areas, which is a very welcoming step by the government, both of the center and the state, non-BADP fund also should be enhanced. I would not like to go any further, but there are so many things which I can narrate. But there is one important aspect which I would like to mention. This has come out also in the short duration discussion just today. The de-reservation of the reserve forests. While standing up to the occasion and participating in the budget discussion towards the development and progress of our state,
there can be no semblance of progress and development if there is no land. Yes, Arunachal has got a huge geographical area of 83,000 plus square kilometers. That is besides the point. But we have more than 10,000 square kilometers under the reserve forest. Besides the other forests of protected forests and the unclassified state forest, which is equivalent to more than 2/3 of our state area, 51 or 52,000 square kilometers to be precise. Why this de-reservation is important as far as the environment and forest is concerned is because on every occasion when there are plans and programs to partake to development, even a simple road construction, and most of the foothill areas of our state are reserve category. Now the permission has to be taken from the Environment and Forest Government of India, and forest clearance has to be given. There are over 307 notified forests in Arunachal. (66%), that is 201 of such forests are still awaiting final notifications. For example, even Itanagar, our capital, is under the wildlife sanctuary. Itanagar Reserve, which was declared a wildlife sanctuary. Just a few months back, there was a tussle between the highway and the forest department in regard to the construction, the extension of NH 415. Why? Because of this forest issue. So we have to take some decision, urgent decision, to clarify this notion. Many of the areas, I'm not saying that we should declare as de-reserve the entire forest, but particularly areas which may be required for the progress and development projects that will come up in the state, those have to be earmarked. Deomali is under the reserve forest. Although Deomali town existed in 1948, Namsai itself is under the reserve forest. Deopani was de-reserve, 134 hectares. De-reserved. Especially the township that has come up, like Namsai, like Deomali, and some settlement areas in my constituency of Bogapani. And there may be various other places also which required. Ultimately, the budget is for the development of our state. And where do we develop? There are towns which have come up like Deomali and Namsai, for example, even Itanagar. Tomorrow any activist can raise this issue. So the government has to be deeply concerned as far as this is concerned. And I suggest that the Honorable Supreme Court may be approached
to constitute a high-powered committee or a central empowerment committee comprising of retired Chief Justice to suggest ways to come out of this precarious situation in the best interest of the state, country, and also the flora and fauna, to put an end to the mockery of reserve forest status. Taking into consideration all the stakeholders that are there. So this is one very important issue that has to be given due cognizance. And as far as the police department is concerned, the activities of the police in controlling the law and order in the state has made tremendous strides. And for this, I would like to suggest one particular request is that many Mahila police stations have been set up in various townships and district headquarters. Kunsa, one of the oldest headquarters of the state, district headquarters, is yet to come up with any Mahila police station. So I request that a Mahila police station at Kunsa also to come up within the current fiscal. आपका भी मेंशन, आपका नोट भी है. While supporting the budget, I appreciate the concern of the finance minister in trying to bring about a best possible budget as can be in this very difficult situation of this COVID era, and trying his best to bring about development, structural activities in the state. And I'm sure that this amount that has been kept would be spent in a very judicious manner, and it will reach each and every pocket of the state for its future growth. Thank you, sir. Thank you. Next, Lumbutang, Honorable MLA. So please try to manage and maintain time because we have so many. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. I won't touch upon the budget discussion is because in the history of this August floor of House, we have already passed the budget without discussion. So, sir, I will begin with few submissions only for the consideration of the government. First of all, sir, when the budget was already passed, my submission would be regarding enhancement of the MLA Local Area Development Fund. I urge upon the government that the MLA Local Area Development Scheme funds should be raised from 3.25 crores per annum to 5 crores per annum. Yes, because it is only the sustainable scheme available with the MLA to maintain their own constituencies. I think almost all my member colleagues will agree with the enhancement of the rate. Secondly, this may be just to make out the fund, if necessary,
Mr. Chairman, if necessary, fund may be curtailed from some other sectors to make it 5 crores per annum. Sir, Chief Minister's Gramin Awas Yojana is really a popular program. This should be enhanced from 1 to 2 to 3 villages in a constituency in a year. For sir, what I saw is inordinate delay in according financial concurrence to any schemes. For example, during May 2021, Education Department moved the case for obtaining financial concurrence for a sum of rupees 2 crores for meeting up the 100-bedded girls' hostel in the entire state, which was released as the central share from Government of India. Now the total committed liability in the Education Department is still 15 crores, Chairman sir. Education Department was supposed to submit the utilization certificate after using these 2 crores. But the concurrence accorded only February, March. Where is the time for them to use? And where is the time for the Education Department to submit the utilization certificate to Government of India to obtain the subsequent installment? I think the system should be corrected. And secondly, under the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, there should be equal distribution of fund in all the places in the state for equitable development in the state. There is दोनों नहीं सुनने वाला parity. अब किसको बोल Anyway, it will be recorded, sir. They will hear from the recording system. दो मालिक नहीं है And then secondly, sir, Chairman sir, I would suggest the government of Arunachal that the district development committee be wind up. Initially, it was constituted in order to avoid the overcrowding and unnecessary hovering around the CMO, Deputy Minister's office, and also other offices by so many individual people asking for the individual schemes. But what I found, the district development committee has got nothing to do in any schemes and obtaining sanction from the government also. Any schemes decided in the district development committee is not taken in consideration even in the cabinet committee on infrastructure also. So this may be wind up. And I am also in agreement with Honorable Member Kangong Taku and Wang Linji for enhancement of non-BADP fund at least to 3 crores in a year. Sir, I appreciate the government is frank enough to lay a deficit budget. And that deficit should be borne by every one of us. But at the same time,
what I should say is, state is facing the deficit, but somewhere there is surplus. Fund is pumping and pumping and pumping in only few selected places. So it should not be happen right from this year. Then Chief Minister's Samaj Shiksha Yojana should also be continued with sufficient fund. Then lastly, sir, Chairman sir, my request to government is, since we are now a COVID-free state, the austerity measure for creation of posts, for sanction, for everything, austerity measure which was imposed upon should be lifted. With this, I need not support, but we have already passed the budget earlier. I extend my sincere thanks to you, Mr. Chairman, for giving me the chance. Thank you. Thank you, Honorable Member. Now, Tarin Dakpe, Honorable Member. Thank you, Honorable Chairman, giving me this opportunity to participate the budget discussion of 2022-23. First of all, I would like to congratulate the Council of Ministers, particularly Chief Minister and Deputy Chief Minister, and also the Planning and Finance Investment Department for preparing, meticulously covering all the sectors. Under the energetic and young leadership of Chief Minister, has performed well supportive budget for the year 2022-23. Hopefully, 2022-23 budget will definitely take our state in one step ahead of development of project schemes. Although this budget has covered up all the sectors, and this time the 6 pillars have been guided in this budget. That is, investing in health sector, investment in human capital, Atmanirbhar Arunachal Pradesh, synergy and convergence, governance, environment and protection, and climate resilient infrastructure. Last 2.5 years, we were under lockdown of pandemic, 2019 pandemic. The state is emerging out of the COVID-19 pandemic. We have learned lessons during pandemic. Due consideration may be taken and need to shift the focus from expenditure-oriented planning to outcome-oriented planning. Although this has been taken in this budget, this budget taken in the budget, as I have seen, required to be aligned with SDG goal. It is observed that several budget announcements were made in the previous years, but many of them could not be taken up as due to various timeline factors. We must appreciate the government who have suggested how budget has to be oriented for the next
and their valuable suggestions for the state budget and share priority concern. This has already been brought to the common people to participate and is appreciable and commendable. I am happy that proposal to increase the allocation for honorarium to registered indigenous priests, especially. This government has taken our traditional ritual, especially the priest. Here, the government has earmarked for honorarium for priests. Yesterday, I think I have discussed in my star question regarding modalities, how the priest has to be appointed and their guidelines has to be made. After announcement, guidelines is given, the deputy commissioners or circle officers are to be made, and they should scrutinize it, and the priest which will daily, the priest whom they will select or appoint must be a real priest. Here in this budget also, rupees 250 crores. And also 60 identified PHCs, CHCs. Here I would like to urge upon the government through you, sir, the funding pattern, especially construction of hospital, district DC secretariat, should not be made phase manner. It should be funded at one go, so that the hospital could be built up within 2 years or 1.5 years. And also district secretariat, DC secretariat. I have seen that phase manner funding this year, say, in my district, DC secretariat has been sanctioned last 2019-20. Due to pandemic, of course, it could not be materialized. But the fund has been funded for only 50 lakh, which was sanctioned for 12 crore 50 lakhs. In this manner, if we go phase manner, it will never be completed within the stipulated period. As a result, उगर होने वाला नहीं है. तो इसलिए my submission to the government, especially hospital जो आपने earmark किया है, and district secretariat को जो earmark किया, उसको full funding होना है, so that we can continue it, complete it within 2 years. ये मेरा submission है. Budget to education में फोकस किया है. Then 2021 was declared as education year. तो उसमें भी ये है, लास्ट 2021 में डिक्लेयर किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. दिस ईयर आई हैव सीन दैट अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट में रागा हायर सेकेंडरी स्कूल हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, लेकिन फंड नहीं हुआ है. तो इसी वजह में अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम. तो उसको अगर विद इन 1 or 2 ईयर में अगर एट वन गो फंडिंग नहीं देगा, देन डेफिनेटली हम लोगों का टेन्योर तो 24 में खत्म होने वाला है. ड्यूरिंग आवर टेन्योर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे. इसलिए इसमें भी मेरा जो रिक्वेस्ट है कि यू हैव earmarked for 500 crore, whether you are going to give at one go or phase manner. तभी तो आज का जो है स्कूल हम लोगों का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, हमारा डिप्टी सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का जो विजन है,
वो कंप्लीट होना होगा तो ये पूरा फंडिंग देने से अच्छा है, मेरा जो रिक्वेस्ट है। लॉट ऑफ टॉक हैज़ बीन टेकन अप, स्पेशली स्पोर्ट्स एंड यूथ का बहुत अच्छा है। हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर तो इज टेकिंग सो मच इनिशिएटिव। रियली ये जो है हमको इनकरेज करना है। यूथ आजकल ड्रग एडिक्शन हो रहा है और सब लोग अपना लाइन से भागते जा रहा है। इफ़ वी कैन ब्रिंग देम बैक द स्पोर्ट्स स्पिरिट में, डेफिनेटली हम लोगों का स्टेट यूथ का एम्प्लॉयमेंट आजकल नाउअडेज क्रिकेट में बोलिए, एनी स्पोर्ट्स इवेंट में ही और शी इज़ एक्सपर्ट मीन्स वो उसका अपना लाइन भी बन जाता है, इसलिए ये बहुत इनकरेजेबल है। देन अदर्स जो है आपका इधर दिया हुआ है, और स्पेशली अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने एक बढ़िया अच्छा चीज़ लिया है कि एयरगन सरेंडर अभियान, और कल भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि अभी तो एयरगन सरेंडर अभियान के बाद हम कुछ चिड़िया का चींची या चिड़िया का आवाज़ सुनने आया है। ये अभियान सचमुच और भी जोर लगाने से ठीक है। रोयो सर, आई वुड लाइक टू आर्ट स्टीम कॉलेग्स ऑनरेबल MLAs, अपना डिस्ट्रिक्ट में जैसा हमने तो सरेंडर कराया मेरा उधर जब मिनिस्टर आए थे, दैट इज़ ऑल्सो इन रिमोट प्लेस। जब फॉरेस्ट का वो लास्ट टाइम हमने डी रिजर्व के लिए रिक्वेस्ट किया था, आज भी ये चर्चा हुआ डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो मेरा उधर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया। देन आई हैड यहाँ में अगस्त हाउस में हमने अपील किया था, अर्ज किया था गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंगली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने खुद देखा है कि सचमुच गांव तो वाइल्ड लाइफ का अंदर में पड़ गया। दैट इज़ वाई इसको भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाकर, जैसा सर ने तो बोला है पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सेम थिंग इसको सुप्रीम कोर्ट में तक ले जाने के लिए कमेटी बनाना पड़ेगा। कमेटी का स्क्रूटिनी करके हम लोग भेजना है। और आज तो आश्वासन दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कि हर DC को और DFO को और ऑनरेबल MLA लोगों को कि जल्दी से जल्दी इसका जो एक सजेशन या आपका उसका माइनस बना के भेजने के लिए वी आर डेफिनेटली अच्छा है। एक हमारा जो गवर्नमेंट का ये 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में कैबिनेट मीटिंग हुआ था 0 में ऑन 28 फरवरी को। ये 365 इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट फिक्स किया था कि इस बार कंप्लीट होना है, ईयर ऑफ द जुबली ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। बहुत अच्छा बात है। इसी तरह ये मिशन चलते जाने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे, हमारा जो स्टेट का, ये बहुत अच्छा है। इसको हम तो अप्रिशिएट करना ज़रूर है। और एक अच्छा काम किया ये गवर्नमेंट का, कमिटेड टू प्रोवाइड 10% ऑफ स्टेट ओन टैक्सेस रिवेन्यूज टू PRS, जो ग्रास रूट बॉडी को, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा पंचायत बॉडी, ये बहुत अच्छा है कि ग्रास रूट में हम लोग इनकरेज देने से वही डेवलपमेंट उधर ही होगा। मेरा जो प्रीवियस स्पीकर ऑनरेबल MLA का उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा बोला है कि इतना इन्होंने एलाबोरेटली बोला है कि ग्रास रूट काम है, डेवलपमेंट काम है, गांव में है। गांव से डेवलप होने से हमारा बाहर में डेवलप होगा। इसी तरह ये जो है पंचायत राज को एक स्टेट लेवल से ये गवर्नमेंट 10% ऑफ स्टेट ओन टैक्सेस रिवेन्यू जो PR को देने का, ये बहुत अप्रिशिएबल है, सराहनीय है एंड अप्रिशिएबल। One of the most important topics during this ongoing BE 22-23, I'd like to speak the present scenario of education system. Is deteriorating day by day. The reason is
very simple. Enrollment number decreasing due to non-functional schools in the main reason is SSA, Sarva Shiksha Abhiyan teachers. ये सर्व शिक्षा अभियान का जो है teachers who have been posted in interior schools do not get regular salary even after 6 months. As a result, teachers are not staying at their posting place due to non-receipt of their payment. ये एक मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया और मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो मोस्टली ये सर्व शिक्षा अभियान का जो टीचर्स है दे डू नॉट स्टे देयर बिकॉज ऑफ दैट ओनली. 6 महीना अगर दरमा नहीं मिलेगा वो कहाँ से खाएगा? गांव में तो कुछ मिलता नहीं. इसको हम लोगों को गौर से देखना पड़ेगा और आई वुड लाइक टू माई हम्बल सबमिशन टू द गवर्नमेंट थ्रू यू सर, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा सर्व शिक्षा अभियान का कैसे पेमेंट कर सकते, वेदर वी कैन उनको रेगुलाइज कर सकता है या उसको पेज मैनर में हम लोग एक गोल्डन हैंडचेक देकर भेज सकता है. नहीं, दैट कैन बी थॉट ऑफ. हम लोग यही थोड़ा देखना पड़ेगा. सिंपली स्कूल टीचर चाहिए. अभी तो सीएम का जो है ये टीचर अपॉइंटमेंट के लिए प्रिंसिपल लोगों को और डीडीएससी को पैसा कुछ रखा 7 करोड़ ना, इससे होने वाला नहीं. विल हैव टू डू ड्रास्टिकली. हमको फ्यूचर को देखना है. जस्ट मोमेंटरी प्लीजर या मोमेंटरी के लिए ये कभी नहीं होने वाला है. इसलिए मेरा सबमिशन है स्पेशली